देखो डेफिनेशन पढ़ो. What is written in the definition? First of all, remember angle of friction is represented by the Greek alphabet alpha. Okay, so we represent the angle of friction by the Greek alphabet alpha. Okay. अब definition क्या कहती है? What is angle of friction? The definition says that the angle made by the resultant of normal reaction and the limiting friction with the normal reaction. अब ये पढ़ के समझ में नहीं आया आपको क्या होगा? I will explain you in a very simple manner. Okay. What the definition is trying to say? This is a block of mkg mass. Okay. And is kept on the ground. ये mkg का एक block है जिसका mass mkg है. It is kept on the surface of the ground. ये डेफिनेशन अभी सुन लोगे ना हमेशा याद रहेगी. अब एग्जाम के टाइम पे ना कभी रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिपोज क्या होता है, इस तरह की डेफिनेशन है. ये छोटी छोटी मतलब एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं मैं. इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप अभी सुन लोगे कभी नहीं भूलोगे. मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं समझाऊंगा मैं, लेकिन सुन लोगे अभी तो, क्योंकि बहुत सिंपल चीजें कभी भी नहीं भूलोगे. ये ऐसी चीजें होती है जिसे रिवाइज नहीं करना पड़ता. जैसे फिजिक्स में ना फॉर्मूला रिवाइज करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट कभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं. जो ध्यान से सुनता है ना क्लास में, वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा. फॉर्मूला भूल सकता है कि अरे वेलोसिटी ऊपर थी या नीचे थी, वो उतना दैट इज एक्सेप्टेबल. कॉन्सेप्ट पूरा कभी रिवाइज नहीं हो सकता. तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान सुनना है. So this is ground. ठीक है. Now tell me that if this block is kept on the ground and it is not moving, okay, despite that I'm applying an external force from the left hand side. मैंने यहाँ से external force भी लगा रखी है which is pulling the block towards left. Still the block is not moving on ground. So कितनी forces block के ऊपर act कर रही होंगी? The first one being the weight of the block mg downwards. Now due to this mg force there will be a normal reaction upwards, okay, which will be equal to mg. So normal reaction is the first contact force which will be acting. What are contact force? Contact forces are those forces which act due to the when two surfaces are in contact with each other. Now the second force will be the frictional force, which is self understood, because if I'm pulling the block toward the left hand side, the friction by ground will pull the block towards the right hand side, so that the block does not move and it stays in the rest position. So friction will be applying on the right hand side. It will be of the limiting value, its maximum value. Okay, so this is the second contact force. Whatever eraser ले लेता हूं मैं. This is second contact force. Now the resultant of both these contact forces, for the resultant of both the contact forces, that is normal reaction and friction. Now friction is a horizontal force, as you can see, it is horizontal force. And what is the normal reaction? It is the vertical force. So it is the vertical force. The resultant of both the forces, that is normal reaction and friction, will be this somewhere in between the normal reaction and friction. Resultant of both the forces will be somewhere in between normal reaction and the frictional force. So the angle made by the resultant of both the contact forces with the normal reaction. So resultant of both the angle made by the resultant. So we will start the angle from this side. Angle made by the resultant of both the forces with the normal reaction. So with the normal reaction will be this angle alpha. So if this is the normal reaction, this is the frictional force. So resultant of both the normal reaction and the frictional force will be somewhere in between them. So this is the resultant. Angle made by the resultant with the normal reaction will be alpha. So angle made by the resultant of both the forces with the normal reaction is the angle of friction. ठीक है, अभी समझ में आया angle of friction? Just quickly let me know. पूरा नहीं सुना, no problem. अभी बताओ, अभी समझ में आया? Just see the screen once again डायग्राम के लिए.
Let me see how many of you. Yes sir, yes sir. Only 2 people out of 4. Sapna और Prasanna, you don't understand. आप लोगों को समझ में नहीं आया है. You didn't understand this concept of limiting friction. भैया है ही क्या, 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है, एक फ्रिक्शन है. उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उनके बीच में होगा. ये तो आपने पढ़ चुका है अपना सेकंड चैप्टर में, मोशन इन 2D में रिजल्टेंट निकालना. तो एंगल जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ बना रहे हैं उसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं. इतनी सी तो बात समझाइए. इसमें आपको प्रॉब्लम किस स्टेप पे आ रही है वो बताओ. मैं एंगल ऑफ रिपोज नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको अगर आप लोग. चलो, प्रसन्ना हैज आल्सो सेड यस, समझ आया सर. बट इतना टाइम नहीं लगाओ. मैं इतना टाइम रुकता इसीलिए हूँ कि चलो सब रिस्पॉन्ड कर दें. चलो, अभी तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया आपको. अब इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन समझाता हूँ. ठीक है, एंगल फ्रिक्शन से रिलेटेड कैलकुलेशन होती है. तो कैलकुलेशन होती किस लिए? हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा? सो इफ आई से हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने बता तो दिया दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट, ग्रीक अल्फाबेट अल्फा. बट उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सो इट्स सिंपल. mg normal reaction, friction, resultant, and this angle is alpha. But what will be the value of alpha? How do you calculate that? So first of all, you need to know what is the value of the resultant force. इसकी value क्या है? तो resultant force की value क्या होगी? By the vector addition we know it will be equal to sum of the normal reaction plus the sum of the frictional force. The values, if you square and add the values of normal reaction and the frictional force and under the root sign, you will get the value of the resultant force. ऐसे ही निकालते थे. Resultant दो vectors का resultant of between two vectors is calculated कैसे? Square of both the component vectors. Values of component vectors को square करके add करो inside the root, inside the square root. तो that way you calculate the resultant. This formula everybody remembers. Okay. Now, what is the value of friction? How do you calculate the value of friction? Friction is simply it's mu times n. I said very right. Friction simply mu times n. Okay. If friction is mu times n, what is the value of tan alpha from this triangle? From this triangle, what is the value of tan alpha? Okay, if this is resultant, this side is resultant, this side is normal reaction, and I've shifted the frictional side to upward, so this side is friction. Let me draw this triangle. This, and this. This is normal reaction, this is friction, this is resultant, and this angle is alpha. So I am asking you, what is the value of tan alpha from here? Tan alpha की value क्या होगा? If you look at it, you will simply say tan alpha is opposite upon adjacent, so it will be frictional force upon normal reaction. I said very correct. Tan alpha will be frictional force upon normal reaction. But now we will put the value of friction force, which is mu times n here. So we'll get tan alpha is equals to mu times n upon n. So n, say n cancel, so n and n will cancel out, and at last the alpha will be equal to tan inverse mu. So this is the value of angle of friction. It is tan inverse times your coefficient of friction. What is mu? Your coefficient of friction. So that's how you calculate the value of angle of friction alpha. Quickly give me a yes or no. समझ में आया या नहीं? Okay, you can see the screen and tell me.
कितना टाइम में यस बोलेंगे बच्चे? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको बोला रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है? दो वेक्टर फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, दो वेक्टर फोर्सेस है, ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट फोर्स है निकालना है हमको। उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे? रिजल्टेंट दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे? अंडर द स्क्वायर रूट वी यूज टू ऐड द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ देम। स्क्वायर रूट के अंदर देखो n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर मैंने ऐड किया है। ओके, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू का स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है। ये तो आपको बताने के लिए कि रिजल्टेंट की वैल्यू निकलेगी कैसे, ये सिर्फ इसका इतना ही रोल था और कोई रोल नहीं था। कभी आपसे बोले ना कैलकुलेट द वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स, तो कैसे निकालते हैं? ऐसे सिंपल। अब tan अल्फा कैसे निकालोगे आप? tan अल्फा आप निकालोगे, tan अल्फा नहीं, आप अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको tan अल्फा का यूज करना है। tan अल्फा will be equal to frictional force upon normal reaction by from the triangle। वो ट्रायंगल समझ आया मैंने कैसे बनाया? फ्रिक्शन नीचे हॉरिजॉन्टल पे था, उसको शिफ्ट करके मैं ऊपर ले आया। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था मैंने आपको कि पैरेलली वेक्टर्स को शिफ्ट कर देते हैं तो उनकी वैल्यू और डायरेक्शन सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। तो बस वो किया है। तो आई हैव शिफ्टेड द वेक्टर पैरेलली। तो ये ट्रायंगल मैंने बनाया जो नीचे बना हुआ है एन आर और एफ का, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिट अपॉन एडजेसेंट नॉर्मल रिएक्शन। tan अल्फा विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन की मैंने वैल्यू रख दी वहां पे म्यू टाइम्स n। जो हम फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन म्यू n, ठीक है। सो म्यू n अपॉन n, सो n इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल गेट कैंसिल्ड, ठीक है। तो n से n कटेगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? यहाँ से tan को उस तरफ भेजो, tan इनवर्स म्यू, ये अल्फा की वैल्यू है। जो भी आपको ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन दिया उसका tan इनवर्स करना है आपको, tan इनवर्स म्यू। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको बस फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला कैसे आया, क्वेश्चन भी दूंगा अभी। परेशान क्यों हो रहे हो? क्वेश्चन दूंगा प्रॉपर इसका। हम्म, हाँ भाई, दीपिका समझ में आया अभी? ऑन अदर्स अब समझ में आया? कोई रिप्लाई नहीं करता, सन्नाटा है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बलवीर जी को समझ में आ गया? गुड, very good. Now we'll move to angle of repose. Angle of repose आखिर होता क्या? First of all, again, angle of repose को you understand that we denote the angle of repose by the Greek alphabet theta। ये ना थोड़ा सा स्पेस मैंने इसीलिए छोड़ा था कि मैं आपको क्लास में समझाऊं। Okay, we denote the angle of repose by the Greek alphabet theta. Now, read the definition. What is the angle of repose? The minimum angle made by an inclined plane with the horizontal. The minimum angle made by an inclined plane with the horizontal such that the object placed on the inclined surface just begins to slide. अब मुझे एक बात बताओ, ये डायग्राम देखकर ही आपको समझ आ रहा होगा कि थीटा कहां बनेगा। थीटा है क्या? एंगल ऑफ रिपोज है क्या? एंगल ऑफ रिपोज इज दैट इंक्लिनेशन टू विच यू विल रेज द सरफेस। ओके, सपोज करो इस दिस इज अ डायग्राम, फाइनल डायग्राम। इसका प्री वर्जन बनाता हूं। ओके, प्री वर्जन, this was like this is the ground, okay, and above the ground a plank was kept like this। oh, not like this, टेढ़ा बन गया। Above the ground a plank was placed like this, and on that plank a box was placed like this m। so in this case, if you will the block will not fall, okay, the block will not slip actually, okay, but if you will keep on increasing the angle of the, what should I say, this platform, ये जो आपने प्लेटफॉर्म बना ना, ये इसका एंगल, सपोज दिस इज द ग्राउंड, इफ यू इंक्रीज द एंगल by some amount, let's say 30 degree, okay, now the block will starts to slip। okay, now like this only we have to raise this platform with respect to ground from like 0 degrees, and then we'll keep on increasing, then again we'll keep on increasing, finally we will arrive at a certain angle, okay, like this angle, certain angle,
at which the blocks will starts to slide. Okay, हम क्या करेंगे, ग्राउंड से ना इसको, ये सरफेस यहाँ पे होगा, दिस सरफेस विल बी हियर, यहाँ पे होगा। तो अब जब यहाँ पे ब्लॉक होगा, when the surface is making 0 degree with the ground, okay, it's just parallel to the ground, 0 degree, then the block on the surface will not slip. Okay, but if I will increase the angle at which the platform is making with the ground, okay, then at a certain angle theta, the block kept on that platform will start to slip. Okay, because I have been constantly increasing and slanting the platform. तो मैं प्लेटफॉर्म को स्लांट कर रहा हूं slowly and increasing the angle made by the platform and the ground. Okay, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपने एक टेबल को which is kept on the floor, है ना, you are you know what, lifting the table from one side while the other end of the table remains constantly touching the ground, and you're lifting the other end of the table. So the table, the bottom surface of the table will make certain angle with the ground. So that angle is the angle of repose theta. That angle is the angle of repose theta. The angle of inclination, and now we'll read by the definition कि क्या है। धीरे धीरे जैसे आपने सरफेस को उठाया ना हर ग्राउंड से 0 डिग्री से लेकर के आप सर्टेन एंगल थीटा तक पहुंचे, जहां पर पे ब्लॉक अब स्लाइड करना शुरू करेगा, वो एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अब सरफेस को ग्राउंड से थोड़ा उठा रहे हो, ठीक है, और एक सर्टेन एंगल पे आप पहुंचते हो प्लेटफॉर्म को उठाते उठाते जिस पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है। जब आप देखते हो कि इस एंगल पे जैसे ही पहुंचे वैसे ही ब्लॉक स्लाइड कर गया, ठीक है ना, एक सर्टेन एंगल पे आप पहुंचे, जैसे स्टार्टिंग में 0 डिग्रीज पे तो क्या ही स्लिप करेगा ब्लॉक, फिर 5 डिग्रीज पे नहीं गया, 10 डिग्रीज पे नहीं गया, 15 पे, 20 पे, 25, 30 पे नहीं गया, बट एज सून एज यू अराइव एट 37 डिग्री द ब्लॉक ऑन दैट प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स टू स्लिप डाउन। ओके, द ब्लॉक वो स्लिप करके नीचे आ रहा है फिसल के, तो वो एंगल इंक्लिनेशन का क्या होगा ग्राउंड के साथ, उसको ही एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of your platform with the ground at which the object kept above the platform starts to slip downwards. ठीक है, that is the angle of repose. So it is denoted by theta, theta and theta. The angle of repose की definition तो clear होगी। इस इमेज में this will be theta, this angle will be theta. थीटा। ओके, नाउ इससे पहले हम कैलकुलेशंस की तरफ चलें। I'd just like to know, is the definition of angle of repose clear? Angle of repose, the meaning of angle of repose is clear to you? समझ में आया इतना? ये हाँ, तो मैं once repeat. हाँ प्रसन्ना, speak. What do you want to speak? I have read your response. I was just on some call, so I was actually I've been very busy these days. मैंने आपको कल last
Monday. Yesterday I did not even I've not taken class. That's why. Yeah. Tell me, Prasanna, what do you want to say? Prasanna, you want to say something? I hope you don't want to say something. Last topic. I will repeat. Don't worry. Angle of repose, Prasanna, is the angle at which the your platform is inclined with respect to the ground. Okay, the angle of repose is that angle on which you इसको छोड़ दो ऐसे. You think like you have a table. Okay, your study table. You have a study table in your home. Okay, so on the one corner of the study table, you have kept your book. Okay, physics book. Now, what you are doing is you are lifting that corner of the table on which you have kept your physics book up in the air, okay, such that the other end of your table touches the ground. Okay, let me explain this like this. This is your table, okay, and at this end you have kept your physics book. Okay, now this is the ground. This end, this A end of your table is touching the ground, while the end B, you are raising this up in the air like this. Okay, so this is your A end and this is your B end. You have been raising this end B like this. Okay, now then furthermore, somewhat like this. And this is A and this is B end, and this is your physics book on the end B. Okay, person. So the angle of repose is that angle with which your table is inclined to the ground, and at that specific angle your physics book starts to slip downwards. Okay, your book won't slip when the angle was, let's say, some beta, let's say 10 degree, but as soon as the angle changed to 60 degree, just for example, your physics book kept on the other end of the table starts to slip downwards. So the angle 60 degree is the angle of repose. That is, at 60 degree, the object placed on the inclined surface, the object placed on your table, which was the inclined surface, just begins to slide at 60 degree. Your physics booklet just begins to slide downwards. So that is the angle of repose. Read the definition. You will correlate with the example. Okay, take 1 minute. Then you will understand. मेरी एनर्जी भी आज कम है. I know my energy is down today. I've been really working and I'm busy in many things this week, this whole week. So my energy is divided in the functions, in my own work. So that's maybe that's why you guys are not feeling utna energy aaj meri class mein. But do you understand the logic, person? The logic is simple. You are raising the platform, you are making the platform inclined, and you're raising it to that level at which the object kept on the table starts to slide downwards. I hope it's clear to some extent. If not, tell me. मैं आपको मे बी कुछ वीडियो वगैरह दिखाऊं क्लास में, अगर आप एंगल ऑफ रिपोज. प्रसन्ना, did you understand now? Is it clear? Do you understand? Okay, cool. Perfect. So angle of repose definition is clear. अगर मैं बात करूं कैलकुलेशंस की, sorry. So when a block of mass m slides downwards, what is the maximum force acting on it? It is mg sin theta.
And you all know why it is mg sin theta. We have discussed so many times that the weight of the block mg will be acting downwards, and this angle is theta. Okay, this angle is 90 degree. So this angle automatically will be 90 minus theta. So this angle will be theta. If this angle is theta, this angle is mg, this component will be mg cos theta, and this component will be mg sin theta. I will not repeat this again. That is for sure. ये मैं इतनी बार समझा चुका हूँ. So what we know is that the maximum force acting downwards while the block is slipping. This is the F max. F max equal to mg sin theta. है कि नहीं? Maximum force is equal to F mg sin theta. What is the value of friction? Mu times n. What is n? What is n? N is nothing but n is equal to mg cos theta. Okay, so friction value will be what? Come on, acha, guys don't have mic. Mu mg cos theta. That's the value of friction. So I can say F max is equals to mg sin theta, and I can also say mu mg cos theta is equal to mu mg cos theta is equals to mg sin theta, because the frictional force is the only force. Friction force is the only force which is opposing the mg sin theta force which is acting downwards. Frictional force mu times n is the only force opposing this mg sin theta force, and I am using the word just begins to slide. Where is the word just begins? Just begins to slide. Okay, so it is not sliding properly, it has just begun to slide. Okay, that if we increase the angle way more beyond theta, okay, suppose the angle of repose is 60 degree. If I make the 60 degree to 61 degree, then the block will surely slip. But at 60 degree, it has just started. It has not slipped all throughout the incline and have reached the bottom. No, it's not like that. Till the angle of repose, the way that is, if the angle of repose is 60 degree, the block will not fully slide. It will just slip few inches. That's what you call just begins to slide. उसको आप begins to slide बोलते हो कि बहुत थोड़ा सा फिसलेगा. But इससे मैं increase कर दूंगा angle of repose. If I increase by 1 degree, 2 degrees, then the block will completely slip. ठीक है? So one thing is this. mg sin theta will be equal to mu mg cos theta, because the only force which is opposing the mg sin theta is the friction force. Now, from this, you can calculate the value of theta very easily, because the mg and mg both the sides will get cancelled. Okay, so mu will be equal to sin theta divided by cos theta. That is nothing but mu equals to tan theta. इसको नेक्स्ट पेज पे कर दूं क्या? हाँ, नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन है आपके लिए, एक पेज ऐड कर देते हैं. ओके, F max is equals to what? Mg sin theta, the force which is pulling the responsible for making the block slip downwards. Okay, this mg sin theta is getting opposed by mu times n, which is the frictional force. Okay, mu n is equals to mg sin theta. Ultimately, mu n is nothing but mu mg cos theta equal to mg sin theta. Mg and mg will get cancelled. Mu will be equal to sin theta by cos theta. This cos theta I have transferred to this side. So mu will be ultimately equal to tan theta. Sin theta upon cos theta is nothing but tan theta. Okay, so the ultimate value of theta will be tan inverse mu. So the value in both the cases is same.
whether it is angle of repose or angle of friction, the value is same. Theta is equal to tan inverse mu only, but the definition is way more different. Definition is way more different. Whether the calculation is same, the values are same, but the concept is very different. Angle of friction is the angle between the resultant of both the contact forces, that is normal reaction and friction. So the angle of friction is between the resultant of both the forces and the normal reaction. But the angle of repose is the angle at which the object kept above the inclined surface just begins to slide. An angle of repose is always with the ground, with respect to the ground, whereas the angle of friction is always with respect to normal reaction on the object. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ये आपको क्लियर होना चाहिए. क्या दो बेसिक डिफरेंस तो बहुत सिंपल है. एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में. डायग्राम दिखाया था अभी. एंगल ऑफ रिपोज बनता है वो एंगल जिसपे ब्लॉक जो एक लाइन सरफेस के ऊपर रखा है वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे. ठीक है. इंक्लाइन सरफेस का मतलब आपको पता है, डायग्राम बता दिया मैंने. इंक्लाइन कैसे देखोगे एंगल ऑफ रिपोज, यू जस्ट उसका एक्सपेरिमेंटेशन से आपने एक डिग्री रेज करके देखा, वो पर्टिकुलर एंगल जिसपे आपका ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट किया वो एंगल ऑफ रिपोज बन गया आपका. उससे ऊपर बढ़ाओगे तो ब्लॉक कंप्लीट स्लिप कर जाएगा, उससे नीचे रखोगे तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा. सो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल एट व्हिच द ब्लॉक केप्ट अबव द इंक्लाइंड सरफेस जस्ट बिगिंस टू स्लाइड. The calculation is same. Angle of repose is represented by theta, and theta is also equal to tan inverse mu. And the angle of friction is represented by alpha, and the alpha is also equal to tan inverse mu. तो दोनों की जो values हैं tan inverse mu, theta और alpha की बराबर हैं, लेकिन meaning एकदम different है. Angle of friction कुछ और होता है, angle of repose कुछ और होता है. तो by definition and by definitions they are entirely different things, but by calculation they both give the same value of the angle of friction and angle of repose give the same value. तो वैल्यू सेम आती है, मतलब एकदम डिफरेंट. आई एम सो सॉरी, थोड़ी सी खांसी है. जस्ट टेल मी, चीजें क्लियर हुई ऑल ऑफ यू? Okay, sir. Clear, sir. Yes, sir. What about Malini and Sapna? Malini, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है. Clear? Okay, try this question then. This is 30 degree, okay? This is not 300, this is 30 degree. Mistake here. Let me just correct it. This is 30 degree. Try solving this question.
Are you guys trying? ट्राई कर रहे हो क्योंकि क्लास का टाइम भी हो रहा है ना नेक्स्ट क्लास में. Don't worry, try. देखते हैं इसको तो एक्सपेक्ट करूंगा मैं. But everybody should try. हिंट दूं मैं आप लोगों को? You guys want any hint? सर क्वेश्चन ही हटा दिया, ये रहा. Okay, answers are there. 0.57, 0.43, 0.5. What about सपना? सपना आपको ट्राई नहीं करना है? Anyways, आप लोग दो पूछे हैं ना मैंने, आप लोग एक आंसर क्यों दे रहे हो? मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि कौन सा आंसर कौन सा है. दो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड प्लैंक अलग अलग पूछिए मैंने. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक सेम आएगा. आपने एक आंसर दिया दोनों आपके मुताबिक, तो will the answer for coefficient of static friction and kinetic friction will be same? Because I've asked two coefficients of kinetic, two type of coefficients of friction. Coefficients S लिखा है, static and kinetic. So all of you are giving me single answer. So that means that the static friction and kinetic friction are equal according to you. या अभी आप लोग अलग अलग आंसर भी देने वाले हो? Just clarify. Malini, Prasanna, and Deepika, have all of you given me the one answer because you feel the static friction, kinetic friction will be same, or you are giving one, this is kinetic friction, you will give the answer of static friction, this is static friction, you will give the answer of kinetic as well. मुझे दो वैल्यूज चाहिए फ्रिक्शन की. क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.57 होगा.
What is the value of static friction? Kinetic friction is 0.5, sir. What about Prasanna? Chaliye, anyways. Okay, now I will, एक minute, I'll solve, don't worry. देखो, सीधा सीधा, simply, what you have to do is, म्यूएस निकालने के लिए ना याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज इक्वल टू थीटा ओनली, जो थीटा, सॉरी टैन थीटा, क्या लिख रहा हूं मैं, म्यूएस इज ऑलवेज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, बिकॉज थीटा की डेफिनेशन क्या थी एंगल ऑफ रिपोज की, द एंगल एट विच द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड में आप काइनेटिक मोशन कंसीडर नहीं कर सकते, काइनेटिक मोशन के लिए आपको फुल फ्लेज्ड मोशन चाहिए होता है, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड इज द पॉइंट वेयर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को जस्ट ओवरकम किया, जस्ट, ठीक है, 0.01 सेकंड्स, मतलब मान लो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप स्लिप करते हो, उसको आप बोलते हो जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, ठीक है, बहुत छोटा टाइम फ्रेम, तो उसमें आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ही काम आएगा। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ थीटा, tan inverse mu, so what will be the value of mu, tan theta, so mu s is nothing but tan 30 degree, ठीक है, so you can calculate the value of tan 30 degree, it is 1 by root 3, I guess, yeah, 1 by root 3 होती है, so 1 by root 3 के accordingly the value of mu s will be 1 upon 1.732, 1.7, 0.6 के अराउंड ही आना चाहिए, because 1 upon 1.7 and root 3 is what, root 3 is 1.732, ठीक है, तो इसको 1.7 भी अगर मैं मानूं तो 1 upon 1.7, 0.6, या 0.6 के अराउंड ही आएगा, तो म्यू एस विल बी 0.6। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट म्यू के, म्यू के मैं आपको हिंट दे देता हूं, उसको मुझे आंसर कल फिर से देना, म्यू के इज द वैल्यू क्वेश्चन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, mg sin थीटा, एंड कौन सी फोर्स अपोज कर रही होगी, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, दिस फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बैक साइड, ओके, so the net force on the block for sliding, block of mass m will be nothing but ma is equals to mg sin 30 degree minus the frictional force, ठीक है, माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां से आपको मिल जाएगी म्यू के की वैल्यू, बट इसके लिए आपको ना एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले से, यहां पर क्या आएगा, मास से इतना फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन पता कैसे निकाल सकते हो आप, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, कल सॉल्व करके लाना है, बिकॉज यू सी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0 बिकॉज द ब्लॉक वाज एट रेस्ट, ओके, जस्ट एट द एंगल ऑफ रिपोज इट विल स्टार्ट टू स्लिप, उसको आप मोशन में नहीं लोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर से, आपके पास हाफ है, s आपको 4 मीटर दिया हुआ है, टाइम आपको 4 सेकंड्स गिवन है, तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यू विल पुट दैट हियर, ओके, मास आप कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, यहां से m एंड m okay will get cancelled, so the final answer will be a will be g sin 30 minus mu k g cos 30 degree, will you be able to do it quickly, बताओ मुझे, हिंट भी दे दिया अब तो मैंने, how will you calculate the value of acceleration, I have given you hint, s is equals to
यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना, यहां से m को कॉमन लेके कैंसिल कर देना। नहीं समझ आ रही मेरी कैलकुलेशन में? फास्ट तो बिल्कुल नहीं बोल रहा, m को कॉमन लेके कैंसिल कर देना, सब जगह से बचेगा क्या? बचेगा a इज इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री माइनस जी, यहाँ पे कॉस आएगा है ना, फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एम जी कॉस थीटा, से यहाँ पे जी कॉस 30 डिग्री, म्यू भी तो होगा, सॉरी, म्यू जी कॉस 30 डिग्री, म्यू के जी कॉस 30 डिग्री। यहां से आपको बस म्यू के की वैल्यू निकालनी है, इधर से म्यू के की वैल्यू निकालनी है। दिस इक्वल्स टू ए, ये ए आप जो निकालोगे, s is equals to ut plus half at square से। So with this hint I leave you, we'll meet tomorrow, okay? If you have any doubts, just connect with me in the Telegram, and all the best for your zoology class. Okay, with this hint, try to solve it. With this hint of kinetic friction, static friction, I hope all of you are clear. With the hint I've given, try to solve for kinetic friction. आपको वैल्यूज तो याद ही रहेंगी, ठीक है? 30 डिग्री का इंक्लाइन है, 4 मीटर स्लाइड करा ब्लॉक ने 4 सेकेंड्स में, दैट्स इट।